हेलो, मेरी आवाज आ रही है? शुभम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। Cool. तो फिर शुरू करते हैं। पहले बताओ, कल का कॉन्टेस्ट दिया था, हाँ, दिए थे। कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए? 4 क्वेश्चंस हुए थे। गुड। ठीक है। तो um, बाकी और किसी ने कॉन्टेस्ट दिया था? हाँ, एक दिया था पर वो बात की वो भी घर पे नहीं है। अच्छा, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग से डिस्कस करना शुरू करते हैं then। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ये गिवन एन एरे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब एक डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का एक एरे दिया है, और हमें बोला है कि हम एस पोजीशन एस से स्टार्ट करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, और तुम एक स्टेप में ये एक ऑपरेशन परफॉर्म एग्जैक्टली वन ऑफ दिस। तुम जो स्टार्टिंग पोजीशन है या फिर तुम्हारी जो करंट पोजीशन है उससे या तो तुम एक आगे, दैट इज पोजीशन +1, या तो पोजीशन -1, मूव फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन -1 तक जा सकते हो एक स्टेप में, या तो एक आगे या तो एक पीछे। A sequence of steps will be considered successful if during the entire journey you visit each position xi on the x-axis at least once. Cool, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि हमारे पास x-axis है, इसमें हमारे पास कुछ xi दिए हुए हैं, like x1, x2, x3, like xn for example। और तुम्हें बोला है कि कोई एक पोजीशन s है जहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो। मान लो ये ऐसे तुमने स्टार्टिंग यहाँ से किया, तुमको ये जितने भी एक्स है, ये एक्स एक्सिस पे जितने भी पोजीशंस है, इन सारी पोजीशंस पे एटलीस्ट एक बार जाना है, और हर स्टेप में तुम या तो एक पीछे या तो एक आगे जा सकते हो। तो इसमें इस क्वेश्चन में दो तीन केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि जो सबसे बाद है, लाइक जो लार्जेस्ट एक्स आई है, हम उससे बाद में स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? या तो हो सकता है कि जो लीस्ट एक्सआई, सबसे छोटा एक्सआई है, उससे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि हम कहीं बीच में, मिनिमम और ग्रेटेस्ट के कहीं बीच में स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड केस देखते हैं कि या तो मैक्सिमम के बाद या तो मिनिमम के पीछे। अगर तो मैक्सिमम के बाद हो, तो अगर तुम सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते जाते हो until you find the minimum और द ग्रेटेस्ट, तुम अगर बाद में मैक्सिमम से बाद में हो, अगर तुम उसके जब जस्ट पीछे चलते जाते हो, देन तुम सारे एक्सआई को कवर कर लोगे इन मिनिमम स्टेप्स, बिकॉज तुम्हारे पास एक ही डायरेक्शन में तुम्हें जाना है। सिमिलरली, अगर तुम सबसे मिनिमम से पीछे से शुरू करते हो, देन तुम्हें अगेन सिर्फ एक डायरेक्शन में जाना है ताकि तुम सारे एक्सआई कवर कर लो। तो ये वाला जो केस है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थर्ड केस जो था, दैट इज कि बीच में से कहीं शुरू कर रहे हो, तो इसमें तुम्हें एक बार तो किसी एक एंड पे जाके वापस किसी दूसरे एंड पे जाना पड़ेगा। ये करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, अभी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, पता करो कि ये डिस्टेंस कम है या फिर ये डिस्टेंस कम है, बिकॉज तुम जिस एंड से जाके वापस दूसरे वाले एंड पे जाओगे, ये वाले डिस्टेंस को तुम्हें 2 बार कवर करना पड़ेगा। तो तुम पहले फिगर आउट करो कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये तो ये वाली, एंड देन तुम उस डिस्टेंस से एक एंड पे चले, एंड देन जो डिफरेंस है इनका, एक्स एन माइनस एक्स आई, ऐसा करके तो फर्स्ट पोजीशन पे चलेगा। तो सिंपल इनफ, सिंपल क्वेश्चन है। इसका कोड सिंपल सा ही है कि हमारे पास n है, s है, हमने x ले लिया, एंड देन वी फाइंड आउट कि एकदम मिनिमम एलिमेंट, राइट? इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है जो हमें विजिट करना है।
अगर तुम मिनिमम के पहले स्टार्ट करते हो देन तुम्हें बस जो स्टार्टिंग पोजीशन है बस वहां से लेके मैक्सिमम तक की डिस्टेंस पता करनी है, दैट इज द नंबर ऑफ स्टेप्स यू विल टेक। सिमिलरली अगर तुम मैक्सिमम या फिर जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसके बाद या फिर स्टार्ट करते हो देन तुम्हें अगेन सिर्फ आगे से पीछे की तरफ जाना है, उसमें s माइनस एक्स मिनिमम जो है एलिमेंट उतना स्टेप्स लगेंगे। अदरवाइज तुम पहले जो मिनिमम वाला है वहां तक चले जाओ एंड देन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कवर करेंगे। सिंपल इनफ क्वेश्चन। इसमें कुछ डाउट? नहीं भैया, सेम अप्रोच था। कूल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग s ऑफ लेंथ n। तुम्हें एक स्ट्रिंग s है लेंथ n, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस लेटर्स, कूल। डिटरमिन वेदर देयर exist three non-empty strings a, b, c such that a plus b plus c is s. Plus meaning concatenation, right? A string b is a substring of string a plus c, which is the concatenation of strings a and c. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग ली हुई है, राइट? कि मान लो a b c d e f g या फिर a b c d a g h। इसमें बोला है कि मैं इस स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, राइट? ये मेरे पास अगर स्ट्रिंग दी थी ओरिजिनल तो मैं इस स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे? फॉर एग्जांपल शुरुआत से मुझे एक स्ट्रिंग लेनी है, लास्ट के पार्ट से कुछ स्ट्रिंग लेनी है, बीच का कुछ स्ट्रिंग लेनी है। तो शुरुआत से जो लेंगे, मान लो मैंने लिया a c d e और लास्ट से लिया g h। वो बोल रहा है कि ये जो शुरुआत की स्ट्रिंग है वो है स्ट्रिंग A, जो लास्ट की है वो है स्ट्रिंग C और जो बीच की है वो स्ट्रिंग B। तुम्हें पता करना है कि अगर तुम्हें कोई ये स्ट्रिंग S दी है तो क्या हम उसे ऐसे 3 स्ट्रिंग्स में तोड़ सकते हैं सच दैट जो स्ट्रिंग B है दैट इज अ सबस्ट्रिंग, इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ A एंड C, A प्लस C, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने शुरुआत की जो स्ट्रिंग ली थी, पीछे की जो स्ट्रिंग ली थी, उसको मैंने मर्ज कर दिया है, कंकैटिनेट कर दिया है, ए सी डी ई जी एच। क्या अगर मैं इसकी कोई सबस्ट्रिंग निकालता हूं तो मैं उससे बी निकाल सकता हूं? इज देयर एनी सच पॉसिबल कॉम्बिनेशन? अब इस क्वेश्चन की अप्रोच फेयरली सिंपल है। लेट्स से कि मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है, राइट? कोई एक आर्बिट्ररी स्ट्रिंग दी हुई है, C1 C2 C3, राइट? अब अप टू Cn। अब मान लो कि अगर इसमें कोई भी कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए अगर 2 बार आता है, मैं भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मान लो C2 पे एक बार आ रहा है, C3 पे एक बार आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो बीच 2 ए है, मुझे पता है कि अगर मैंने इस पार्ट को ए लिया है देन फॉर श्योर इसकी मैं कोई एक सबस्ट्रिंग निकाल सकता हूं जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर होगा ए। बाकी की जो भी स्ट्रिंग है सी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उसको मैं सबस्ट्रिंग जब निकालूंगा इग्नोर कर सकता हूं। तो इसमें फेयरली सिंपल अप्रोच ये है कि तुम पता करो कि मैंने अगर पहले से एक पॉइंट तक अगर स्ट्रिंग ली, आखिरी से किसी एक पॉइंट तक स्ट्रिंग ली, उनमें जितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं उनमें से कोई सा भी कैरेक्टर रिपीट कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल था ए सी डी ई ए जी एच, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ए को ले सकता हूँ ए सी डी ई, क्योंकि मेरा जो लेटर ए है वो रिपीट कर रहा है। तो ए के पहले का मैंने ले लिया, ए के बाद का पूरा ले लिया, तो ये मेरी स्ट्रिंग ए हो जाएगी, ये मेरी स्ट्रिंग सी हो जाएगी। ए प्लस स्ट्रिंग मेरी क्या बनेगी, ए प्लस सी मेरी बनेगी ए सी डी ई जी एच। अब मैं उसकी एक सबस्ट्रिंग जो है वो है ए, और वो ए बी हो सकता है, तो ये इस स्ट्रिंग में पॉसिबल है ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना। तो इस क्वेश्चन में यही अप्रोच लगाई है कि तुम पता करो क्या ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जो 2 बार आता है,
एंड वो जो 2 बार आता है वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी नो फॉर श्योर कि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन या तो ए या तो सी का पार्ट होगा, इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बी, राइट। तो बिकॉज उसने बोला है 3 नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स ए बी सी, इसलिए तो अगेन तुम कैरेक्टर पता करो, अगर वो कैरेक्टर एक से ज्यादा बार आता है देन, और वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे नहीं है, देन फॉर श्योर ऐसी स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। इसका सीधा सपोर्ट देख लेते हैं। एक अनऑर्डर्ड मैप यूज किया है, लाइक ईच कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो देख लिया है मैंने। फॉर int i equals to n-1, मैंने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी जो कैरेक्टर है वो कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है उसको स्टोर कर लिया है। अगर वो किसी भी पॉइंट इन द स्ट्रिंग फ्रॉम लेंथ 1, फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम लेंथ 1 टू लेंथ n-1 तक अगर कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है, देन वी नो फॉर श्योर कि सब स्ट्रिंग में ब्रेक किया जा सकता है, एंड आंसर हमारा यस है। अगर थ्रू आउट द स्ट्रिंग ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, देन वी नो फॉर श्योर कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, देन वी जस्ट आउटपुट वन। फेयरली सिंपल, इसमें कोई डाउट है? नहीं भी अंडरस्टूड। कूल, किसी और को? Bhaiya, I used a different approach for this one. I used hash set for this. I actually used Java for this coding purpose. So I used a hash set, and I first inserted first and last element, and I was inserting the other elements of the string which are in the middle one by one, and while inserting I was checking if that element is already present or not. If it's present, if once also, then we will get the desired condition. So Fair that enough. was also. तुमने जावा में अगर तुम कर रहे हो, मैंने एग्जैक्ट चीज बस सी प्लस प्लस में की है। हैशिंग के लिए तुमने वहां पर हैश सेट लगाया, मैंने यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप लगाया है। मैंने फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को ऐड कर दिया है, एंड देन बीच में हर स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को मैं चेक करता गया। तुम्हारी एग्जैक्ट अप्रोच एग्जैक्टली सेम थी, बस तुमने जावा में डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज किया। फेयर इनफ, सही है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर्स with n rows and m columns. The cell at the intersection of the ith row and jth column contains the number aij. You can perform the following operation exactly once. Choose two numbers r, जो कि एक रो है, c एक कॉलम है. For all cells ij in the matrix such that I equal to r or j equal to c, decrease aij by 1. You need to find the minimal possible maximum value in the matrix A after performing exactly one such operation. Okay, cool. क्या बोल रहा है ये कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल A11, A12, A13, A21, A22, A23। यहाँ पर 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। इसमें मुझे मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ एग्जैक्टली वंस, दैट इज मैं कोई एक रो चूज करूंगा, एक कॉलम चूज करूंगा, एंड उस रो एंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनमें उन सबको मैं डिक्रीज कर सकता हूँ बाय 1 यूनिट। और ऐसा करके मुझे पता लगाना है व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब पूरे एलिमेंट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है, पूरे एलिमेंट में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मैक्सिमम एलिमेंट रिमेन करता है उसको हम कितना छोटा बना सकते हैं, राइट। तो मान लो कि मेरे पास एक एरे है 1 2 3 1 2 3। अभी इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 3। मैं अगर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ विद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बन जाएगा, इस रो के सारे एंड कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 1 by 1 से डिक्रीज कर देंगे। तो रिजल्टिंग मेरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो है 0 1 2 1 2 2। तो इस मैट्रिक्स में
जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है नाम है 2। तो मुझे पता करना है कि व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट, इस पूरे मैट्रिक्स में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको मैं कितना छोटा से छोटा बना सकता हूँ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तुम किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक बार डिक्रीज कर सकते हो। तो दो केस है, या तो तुम्हारा आंसर होगा मैक्सिमम एलिमेंट, या तो होगा तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट -1। मान लो तुमने सारे मैक्सिमम एलिमेंट को 1 से डिक्रीज कर दिया, देन आखिरी में वो मैक्सिमम एलिमेंट -1 ही बचेंगे। तो या तो तुम्हारा आंसर ये होगा, या तो हो सकता है कि जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट्स हो एक ऑपरेशन परफॉर्म करके सबको डिक्रीज नहीं किया जा सकता है, एक ना एक मैक्सिमम एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसको जो डिक्रीज नहीं किया जा सकता, एंड हमारा आंसर वही होगा। तो ये करने के लिए एक फेयरली सिंपल अप्रोच ये है कि जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, राइट, मैं जो एग्जांपल मैट्रिक्स है उसी को लेके चलता हूँ। ए लाइक मान लो 3 1 A 3 2 A 3 3। इसमें मैंने बोला कि मुझे पता है, मैंने एक एक करके एरे ट्रेवर्स की, मैंने मैक्सिमम एलिमेंट निकाला ना। मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के बाद मैंने क्या किया, स्टोर किया कि ईच रो में, हर रो में कितने मैक्सिमम, वो जो मैक्सिमम एलिमेंट है कितनी बार आता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास मैट्रिक्स बनती है 1 3 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1। तो मैंने बोला कि मैक्सिमम एलिमेंट मेरा 3 है। फर्स्ट रो में 3 एक बार आता है, सेकेंड रो में 3 एक बार आता है, थर्ड रो में 3 एक बार आता है। सिमिलरली मैं कॉलम के लिए निकालूंगा, फर्स्ट कॉलम में जो 3 है वो एक बार आता है, सेकेंड में 3 एक बार आता है, थर्ड में 3 एक बार आता है, राइट। ऐसा करके मैं हर सेल को चेक कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि जैसे ये 1 1 है, A 1 1, राइट। तो क्या सम ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स इन फर्स्ट कॉलम प्लस सम ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, क्या इनका सम इक्वल्स द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं फर्स्ट को लेता हूं तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसकी रो ये होगी, कॉलम ये होगी, राइट। तो इसकी रो में एक बार 3 आ रहा है एंड कॉलम में एक बार 3 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स इस रो और कॉलम में 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, बट पूरे मैट्रिक्स में 3 बार है। तो मैं अगर ये वाले कॉम्बिनेशन से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, देन मैं सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स को डिक्रीज नहीं कर पाऊंगा, राइट। सिमिलरली मैं एक एक करके ये चेक करूंगा, फिर ये चेक करूंगा। नाउ हमें ये दिखेगा कि हम कोई भी सेल पिक कर लें, किसी भी सेल में ऐसा नहीं होगा that sum of maximum elements in the row and column is equal to the number of maximum elements in the entire matrix। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऐसा केस है, राइट। मान लो मैंने लिया है 1 3 2 1 3 1 एंड 3 1 3। अब मैं हर रो एंड हर कॉलम में फिगर आउट करता हूँ कितने 3 है। मैक्सिमम एलिमेंट 3 है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, ओके। इसमें एक बार है, इसमें 2 बार था, सॉरी, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है ना। मैं इसमें चेक करूंगा, ये वाले सेल में, इसमें रो एंड कॉलम को चेक करता हूँ, एक बार 3 एक बार 3, 2 3 है, बट टोटल 3 मेरे पास है 4, तो ये नहीं हो सकता। मैं इसको चेक करूंगा कि इसमें नंबर ऑफ 3 इन दिस कॉलम एंड रो कितने हैं, 2 है, नॉट इक्वल टू 4। ऐसे कर करके मैं जब एक बार सब चेक कर लूंगा तब मैं इस एलिमेंट पे आता हूँ। इस एलिमेंट पे आके मैंने देखा कि नंबर ऑफ 3 इन दिस रो प्लस नंबर ऑफ 3 इन दिस कॉलम इक्वल टू 4। मतलब मैं जब इस एलिमेंट को रेफरेंस लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, देन इट इज पॉसिबल कि सारे 3 जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट्स उनको कवर किया जाए। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसा इंडेक्स इन दिस मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, देन वी नो कि सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स 1 से डिक्रीज हो जाएंगे और मेरा आंसर होगा मैक्सिमम एलिमेंट -1। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि कोई एलिमेंट पिक करके सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स को कवर कर सके, देन हमारा आंसर होगा मैक्सिमम एलिमेंट, बिकॉज कोई ना कोई एक मैक्सिमम एलिमेंट बचेगा जिसको हम कवर नहीं कर पाए।
कूल। अप्रोच में कोई प्रॉब्लम? किसी को भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट? भैया ऐसा नहीं कर सकते कि जिस पोजीशन पे जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हम लोग स्टोर करते रहें और बस उसी पोजीशन से चेक करें? पूरे मैट्रिक्स को चेक करने के बजाय हम लोग A12 को चेक करेंगे और फिर A22 को, फिर A31 को, ऐसे ऐसे। अच्छा ओके, मान लो मैंने ऐसा किया, तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये वाला चेक किया, इसमें तो सारे कवर नहीं हो रहे हैं। ओके, फिर मैं ये वाला चेक करूंगा, इसमें भी सारे कवर नहीं हो रहे हैं। देन मैंने ये वाला चेक किया, इसमें भी सारे कवर नहीं हो रहे हैं। देन ये वाला चेक किया, इसमें भी सारे कवर नहीं हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर अप्रोच, इसमें मैक्सिमम जो आंसर है हमारा वो 3 आना चाहिए। बट हमें पता है यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसको करने से हमारा आंसर 2 आ रहा है, तो वो वाली अप्रोच काम नहीं करेगी, राइट? तो भैया ठीक है, तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। अगेन सिंपल सही है कि जितने भी एलिमेंट्स उनको इनपुट ले लिया एंड एक बार फॉर लूप लगा के मैंने फाइंड आउट किया मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा था ना। मेरे पास एक वेक्टर है जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ हर रो में कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड मैं स्टोर करूंगा हर कॉलम में कितने मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर एग्जिस्ट करते हैं ना। मैं हर रो हर कॉलम में जब भी मैक्सिमम एलिमेंट इनकाउंटर होता है तो या तो रो या तो दोनों रो कॉलम में ऐड करते जाऊंगा। एंड नाउ अब मेरा जो अप्रोच था, मैं हर एक सेल को चेक करूंगा, मैं हर एक सेल को चेक कर रहा हूँ अभी अगर करंट एलिमेंट वो जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम एलिमेंट है, देन मुझे पता है कि मैं जब सम करूंगा नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन रो प्लस नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन कॉलम, जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 2 बार काउंट होगा तो मैं एक बार माइनस कर रहा हूँ। तो मैं चेक करूंगा कि उस इंडेक्स के लिए 1 2 2 2 2 3 व्हाटएवर इट वाज, उसके लिए क्या सम और रो और कॉलम का सम नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट की इक्वल है। अगर इक्वल है देन पता है कि हाँ हमें एक इंडेक्स मिल गया है जिसको यूज करने से हम सारे मैक्सिमम एलिमेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा करना पॉसिबल है देन हमारा आंसर होगा मैक्सिमम एलिमेंट -1। अदरवाइज हमने अगर पूरा लूप चला लिया एंड हमें कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिला जिसके बाद हम सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स को कवर कर सकते हैं, देन हमारा आंसर मैक्सिमम एलिमेंट होगा बिकॉज कोई ना कोई एक मैक्सिमम एलिमेंट बचेगा। कुल, ये कोड, इसमें कोड में कुछ डाउट? ना भैया। ठीक है, ओके चलो 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर गिवन 2 arrays of integers a1 to an, b1 to bn. It is guaranteed that each integer from 1 to 2n appears in exactly one of the arrays. Okay. You need to perform a certain number of operations so that both of the following conditions are satisfied. क्या है? For each I from 1 to n holds that ai is less than ai plus 1 and bi is less than bi plus 1. And for each I from 1 to n, it holds that ai is less than bi. एंड हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन कितनी भी बार परफॉर्म किया जा सकता है। क्या है वो? चूज एन इंडेक्स आई फ्रॉम 1 to n, n not included. Swap the values of ai and ai plus 1. Choose an index I from 1 to n, swap the values bi and bi plus 1. Choose an index I, 1 n included, and swap the values ai and bi. You do not need to minimize the number of operations, but find the total number. The total number must not exceed 1709. Find any sequence of operations that satisfies both conditions. Cool. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरे पास 2 एरेज दी हुई है, मान लो ये एरे ए है, ये एरे बी है। इसमें अगर इनकी लेंथ ए है, फॉर एग्जांपल n = 3, देन वो बोल रहा है 1 से लेके 6, दैट इज 2 times n तक जितने भी इंटीजर्स है वो एटलीस्ट एक बार एंड मैक्सिमम एक बार एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास एरिया हुआ है 3 4 5 और ये दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 6 है।
1 2 6 मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 सब कम से कम एक एक बार दिए हुए हैं। नाउ हमें क्या करना है कि इसमें हमें ऐसा बनाना है सच दैट फॉर ईच इंडेक्स आई, ए के लिए this element that is a1 is less than a2, a2 is less than a3. Similarly, for 1, b1 is less than b2, b2 is less than b3, and for each index 1 2 3, a1 is less than b1, a2 is less than b2, and a3 is less than b3. ठीक है, तो इसमें एक पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? दैट इज 1 2 3 4 5 6 because 1 is less than 2, 2 is less than 3, 4 is less than 5, 5 is less than 6, 1 is less than 4, 2 is less than 5, 3 is less than 6. ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। एंड हमें बोला है कि हम कोई एक ऑपरेशन दिया है, उस ऑपरेशन हम कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हैं एज लॉन्ग इट इज लेस देन 1709, राइट? तो इसमें क्या कर सकते हैं कि एक और इसमें n की तुम वो देखो रेंज n दिया हुआ है, इट इज लेस देन 40. नाउ अज्यूम कि मेरे पास एक 40 लेंथ का एरे दिए हुए है, राइट? a भी 40 लेंथ की है, b भी 40 लेंथ की है, राइट? अगर मैं ब्रूट फोर्स भी लगाता हूं, दैट इज एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, राइट, अप टू व्हाटएवर इट इज 79 80. ये मुझे अगर अचीव करना है, देन स्टार्टिंग वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है? हो सकता है कि जो 1 मुझे टॉप लेफ्ट में पहुंचाना है वो यहाँ पर एकदम बॉटम राइट में एग्जिस्ट करता हो. दैट इज कि एकदम वर्स्ट केस में मुझे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे? 39 प्लस 1, दैट इज 40 ऑपरेशंस लगेंगे ए को यहां तक पहुंचाने के लिए, राइट? सिमिलरली अगर 2 यहां पर है या फिर 2 यहां पर है, देन अगेन मुझे 40 ऑपरेशंस लगेंगे उसको इस पोजीशन तक पहुंचाने में. मैक्सिमम 40 लग सकता है. दैट इज आई एम टेकिंग द वर्स्ट केस. अब मान लो 1 2 हो गया है, नाउ 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 यहां पर है, 3 को मुझे यहां पर ले जाना है. तो कितने वर्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट केस? द वर्स्ट केस है कि मुझे यहां से लेके उसको यहां पर ले जाना पड़े. दैट इज 1 प्लस 38 ऑपरेशन, दैट इज मुझे 39 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे इवन इन द वर्स्ट केस. सिमिलरली 4 के लिए भी वर्स्ट में 39 परफॉर्म करना पड़ सकता है. सो ऐसे वी सी कि जो हम अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस भी लेते हैं तो दैट इज 40 प्लस 40, राइट, प्लस 39 प्लस 39, राइट? तो ऐसे करते करते अगर हम देखेंगे तो वी फाइंड दैट कि इसका जो सम आएगा दैट इज आई बिलीव इट इज समथिंग लाइक 1640, राइट? समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, एग्जैक्ट चेक कर सकते हो. समथिंग ऐसा उसका सम आएगा, राइट? तो अगर हम वर्स्ट से वर्स्ट केस भी लेते हैं और हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को बनाना चाहते हैं, देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस वी नीड इज 1640. तो हम इस क्वेश्चन में इजीली ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं, राइट? ब्रूट फोर्स कैसे लगाएंगे? तुम 1 को फाइंड करो, उसको यहाँ पर फर्स्ट ए में फर्स्ट पे बैठा दो, देन 2 फाइंड करो, बी में फर्स्ट पे बैठा दो, 3 फाइंड करो, उसको ए में सेकंड पे बैठा दो, 4 फाइंड करो, उसको बी में सेकंड पर बैठा दो, 5 को थर्ड पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस क्वेश्चन में सिंपली मैंने ब्रूट फोर्स लगाया. हर एलिमेंट फाइंड आउट किया है कि वो कौन से इंडेक्स पे है, मतलब कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एंड देन एलिमेंट्स ऑपरेशंस परफॉर्म करें सच दैट
जो उनकी डिजायर्ड लोकेशन है, जो मैंने सीक्वेंस ऑलरेडी सोच के रखा है, वहां तक पहुंचा दो, बिकॉज इवन इन द वर्स्ट केस the amount of operations is still less than the amount of operation that the question asks of us. तो सीधा सही है, इसका डायरेक्ट कोड देख लेते हैं, बिकॉज वी जस्ट ब्रूट फोर्स है, राइट. मैंने AI BI लिए हैं. नाउ फॉर ईच आई, मैं हर एक आई, फॉर ईच आई, फॉर आई टू 1 to 2 to n, 2 times n, that is 2 times n included, मैं करंट पोजीशन फाइंड करूंगा. अभी उसकी जो मुझे एलिमेंट आई चाहिए वो अभी कौन सी पोजीशन पे है, that is position x, position y. Then I'll find out what is the final position x and final position y, that is the intended. अगर 5 था, then उसका है first array A में position is 5 by 2, that is second index 0 1 2, second index, that is the desired position of 5. तो ऐसे करके मैं I के लिए उसकी desired position निकाल लूंगा. And now I'll find the amount of operations. Amount of operations कैसे? दैट इज मुझे पहले अगर y पे चेंज करना है, राइट, कि मैं अगर यहाँ पर अलग से एग्जाम्पल कि मेरे पास था 1 2 नहीं, या फैसला था 1 2 3 ऐसा, मैं अगर मेरा 1 यहाँ पर है, देन मुझे कितने बार उसको y में चेंज करना है, दैट इज करंट y पोजीशन माइनस फाइनल y पोजीशन. एंड मुझे एक बार ऑपरेशन परफॉर्म लगेगा उसको x में a और b में स्वैप करने में. तो करंट ऑपरेशंस दैट इज पोजीशन y माइनस फाइनल पोजीशन y, मैं उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस स्टोर कर लूंगा. एंड व्हाट आई डू इज कि अगर पॉजिटिव, लाइक अगर पॉजिटिव दैट इज फाइनल पोजीशन, अभी जो करंट पोजीशन है दैट इज आफ्टर द फाइनल पोजीशन, मैं बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करते जाऊंगा या उसको स्वैप करते जाऊंगा, राइट. मैंने क्या किया यहाँ पर ऑपरेशन को स्टोर करते गया हूं मैं, बिकॉज मुझे फाइनल में ऑपरेशन प्रिंट करने, एंड मैं उसको स्वैप करते गया पोजीशन को, दैट इज मैं 1 को इससे स्वैप करूंगा, राइट. 1 यहाँ पर था, देन मैं यहाँ पर ले आया, तो एक मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है एंड स्वैप किया है. देन मैं इसको स्वैप करूंगा, देन मैं ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैंने स्वैप किया. ऐसे करते 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 मैं y पोजीशन में बार बार स्वैप कर लूंगा, एंड आखिरी में मैं जाके उसको x पोजीशन में स्वैप कर दूंगा. तो मेरे पास 1 को यहाँ तक पहुंचाने के लिए जितने भी मुझे ऑपरेशंस लग रहे हैं वो पता लग जाएंगे. एंड दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट कि बाय ब्रूट फोर्स की किसी भी एलिमेंट को डिजायर्ड पोजीशन पे ले जाने में कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं. तो अगर इस कोड में कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो. नहीं भैया, पर हम लोग जैसे हम बबल सॉर्ट का एल्गो यूज किए थे, मतलब एडजेसेंट को कंपेयर कर रहे थे, और अगर बड़ा हो रहा था तो हम लोग उसको पुश कर रहे थे वेक्टर में, तो वो भी तो हो सकता है ना? हाँ, आई गेस वो भी कर सकते हो. तो मैं आखिरी में जस्ट फिर चेक करना पड़ेगा कि वो जो फाइनल कंडीशन है हमारी, दैट इज ए और बी वाली, AI शुड बी लेस देन BI, वो सेटिस्फाई बस एक बार तुम्हें कराना पड़ेगा. अदरवाइज आई थिंक नहीं, पहले ए अरे को सॉर्ट करेंगे, फिर बी को, फिर कंपेयर करेंगे ए और बी. हाँ वही एग्जैक्टली, एक बार वो कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगी. कुल हाँ सही है. ठीक है, और कुछ डाउट इसमें? नहीं भैया, समझ गया. ठीक है, और तो फिर बाकी के प्रॉब्लम्स आयुष लेंगे. Hello everyone, am I audible? Yes, yes. Okay, just a second. Is my screen visible? Yes, yeah. Okay, so let us go through the problem E, sponsor of your problems. We'll go through the problem statement once. For two integers a and b, we define f of a, b as the number of positions in the decimal representation of the numbers a and b where the digits are the same. Let us consider an example for this. Suppose if they give 12 and 21.
So I know at this decimal position, they are not the same. And at this position, they are not the same. So the answer for f of a comma b will be 0, right? Similarly, going for 31 and 37, I see that there is a match at position 1 and there's no match at position 2. So my final answer would be 1, right? Okay, so what the question asks us, you are given two integers L and R of the same length in decimal representation. Consider all integers from L to R. Your task is to find the minimum value of f of L comma x plus f of x comma R. That means in between L and R, where both are inclusive, I have to select an integer x such that f of L comma x plus f of x comma R is as minimum as possible, right? Okay, so my first question goes to you. Can we manually iterate over L and R, L from L to R, select an integer x, just check if the positions are matching or not, and directly return the minimum answer? Yes or no? No, dear. Why? Because the L and R is very big number, like 10 to the power 9. Yes, the constraints are really high over here. So it cannot be possible to iterate over L comma R and then select an X from there and then compare. So what can we do actually? Any idea? I think of to take x equal to mean of the L and R, but it doesn't work. No, it won't work. So the way we can do this is to manually create X position by position. Consider L and R to be strings, right? Numbers can be considered to be strings, right or wrong? And as they are of same length, so that is one of the biggest advantage for us in this question. So L comma R can be considered as strings, and X is something which can be constructed manually to check whether we get the minimum answer or not. So how we'll do that? We'll be constructing it manually using a concept known as recursion. I hope this concept is a bit familiar to most of you. Am I clear at this point of time? Okay, so let us consider any one example and see how is it done. 17, 19, as we can see the fifth test case over here. Right? So what is the answer for the fifth test case here? I'm supposed to get 2. Right or wrong? Because see, in between 17 to 19, I can get 18. Now 18 matches with this, I get 1. 9, it matches with this one, I get 1. 1 plus 1, the answer would be 2, right? Right, yeah. Yes. So let us consider this thing. 2 positions over here as of now. So for my first position, where does my integer range from? Integer limit range. 0 to 9. No, 1 to 1 itself. Consider these Okay, two. okay. 1 to 1. And for this one? 7 to 9. Yes, right. So that means like this, we can manually create each and every integer and check whether it is matching or not, right? So for this, we have to design a function. Now there are problems such as if I get 2 integers like this, then deciding the range over here becomes a bit difficult. Right or wrong? Right there. Okay, so for the first position, what could be the integer range? 7 to 9. 7 to 9. But now comes the main catch.
for the second position. So there are three cases over here, 8 to 9, 0 to 9, 0 to 3. This occurs when 7 is chosen over here, right? Yes, sir. This comes up when 8 is chosen over here. That means 80 to 89, all options are possible here, right or wrong? Right. And over here, it happens for 9. That means 90 to 93, the options are possible. So that means I have a tighter bound on the lower as well as the upper. So when I'll be designing my recursive function, I'll make sure that the index is there as well as a lower tight and then upper tight is also there, right? Right. To make sure how will I select my integer from here. So let us start. So obviously when I design my function, so if I reach to the end of the string, then what will I return? If it's a recursive function, I'm first designing the base case. What would be my return from the answer? No idea there. Okay, if I have reached to the end of the string, that means after the end of the string, am I doing any operation? That means am I considering any digits over here? No. So simple, the return will be 0. Okay. Was it clear? Yes, yes. Okay. Now what I'll do is, I'll check my lower limit and the higher limit, right? How will I get my lower limit? That suppose if particular digit is selected at previous, then what will be my lower limit for it and what will be my higher limit for it if a particular digit is selected at first? Lower limit will be the lower element of the R. Yes, the required lower element. Suppose जैसे we had 7 over here, so we had to select from 8 or 9, right? Okay. So also consider 78 as your initial string, right? Right. So how can you use the tight to actually decide what could be my bound here? No idea. How can we use this? Okay, I'll try to explain this. See, if my tight is true, see, tight is nothing but a Boolean value over here. If your tight is true, then can I say that the character at the string, current character of the string, will be my current value, current lower limit, or else it will be 0. Consider Yes. the example. If the tight was 1 here, initially, if 7 was taken, 7 was the lower limit, right? So if the tight was 1, then what happened? My initial lower limit was this, 8, which was the second character here, right or wrong? Right. Similarly, if the tight is true here, upper tight is true here, then I consider the character of the second string, else I consider 9. Right or wrong? Right. Okay. So now what I do is, I'll loop from low to high, both inclusive, in order to construct the string. And I'll consider an answer over here, which is initialized to the maximum integer I know. Could you tell that why am I doing this? We have to store minimum value, I guess.
Yes, right. To store the minimum value, we have to keep it at int max, right? So now if I have to consider the cost over here, the current cost. So can I say that if this chosen D over here is equal to, just a second, is equal to S of I plus T of I, right? Am I right or wrong? This is the current cost which you are having at this particular index. Right. Can you tell why was this chosen? Because we the are current, starting from, yeah. yes, we are checking in with reference to the index at S and T right now. If the current digit D chosen equals S of I, that means there is one match which we are considering, right? Right. And same goes for D. So either of 0, 1 or 2 would be my current cost over here. So to add them accordingly, I have designed this. Right or wrong? Right. And now I'll have to update my tight also. The lower tight needs to be updated, right? Right. So how will I update it using the current tight value? The newer tight value will get a value 1 if the current tight value is 1, as well as your digit considered is low, right? Only if you take the lowest integer, you have the lower tight, right? And then designing the upper tight over here, it goes the same. Just the thing is, your digit which you have chosen currently should be as similar as high, right? Right. Are you able to understand, right? Bhaiya, one problem I have. Can Okay. you explain one more time upper tight and lower tight? Okay. Why do we have the concept of tight? Because of cases like these, wherein we cannot have a perfect range over here and where the range is distributed, right? Okay. So what does lower tight mean? Lower tight means I have a value over here, which is the lowest over here, current lowest, according to the previous index, right? Okay. According to this, it was 7, right? Now, if I take 7, if I consider 7 over here, and if I come to this index, can you tell me what is my lower tight value which I've considered? 3 or 1. It 0. will be true. It will be Okay. 1 Yes. because it is at its lowest capability. So now if my lower tight is 1, so what I have written here, that if my tight is true, then whatever is my current index value, that would be my lower value, right? Okay. So as of now, my lower value will be 8, right? Right. But my upper tight is 0, right? Because I have not yet used this digit to its maximum capability, which was 9. Right or wrong? Right. Right. Able to understand now? Yeah. Yeah. Understand. Then what would be R as per whatever condition I have written over here? If the tight is true, then it will take the current integer or else it will take the max integer which was 9, right? Right. So this was the first case which we have seen. Now suppose if I had taken 8 over here. So that means my current lower tight is 0 because I haven't used it to my lowest capability, right? Right. And even the upper tight is 0 because I haven't used this to my highest capability. Right.
So if lower type was false, if this is not true, then what I'm supposed to return as per this ternary statement? 0. Right. 12 would be 0. Okay. And suppose R. Understood. If my understood this, right? Yeah. You can go ahead. Okay. So were you able to understand that how I'm designing my new tight bounds? No, you can repeat it again. Okay. So for the newer tight value, we'll have to consider the old tight value, whatsoever it was, along with and of checking that whether it is the lowest digit which we have considered it right now. Okay. Because see, once we had designed 7 here, before that our tight was 1. We'll have to consider tight as 1 initially. But when we had 7 here, so we updated our tight to 1. That means tight was earlier 1. And as well as the digit which we are considering now is the lowest digit. So it is 1. 1 and 1 would be 1. So my new tight will be 1. So that will help me accordingly design my range. So was this clear? Okay. Clear. Same goes for the upper tight. When the digit is high, we'll have to take the AND with D over here. Able to understand? Yes. Okay. So now what would be my cost? The current answer as per this. Minimum of NTL plus NTU. Minimum of answer, comma, NTL plus NTU. cost plus something will be there, right? Okay. I told that we'll be using recursion over here. So Yes, now yes. my work is done on the ith index. So now I will call my recursive function for the I plus 1th index. Yes. So I'll go I plus 1. I'll use the new types over here and I'll send it. And ultimately, when this loop gets over, I can return my answer. Able to understand how this is working? Yes, sir. That suppose my work is done for the ith index. Then I move to the I plus 1th index, also ensuring that I have the ith index data with me. And then finally, when I reach to the end of the string, I return the value 0 over here. So what happens? It comes back and starts returning the value then. Then it computes this and then the value is returned. Then it computes this and then it's returned. And finally, for the 0th index, we get the final answer. Able to understand? Yes, sir. But the problem is this kind of solution will give you a time limit exceeded error because of higher constraints here. So because the problem is it can go in exponential time complexity, so we'll have to reduce that. So what can we do? To reduce the time complexity, the whole skeletal structure of the code remains the same. Only one small thing which we have to add that can reduce the time complexity drastically. Any idea? No, dear. Okay, so here I'll be introducing a concept known as dynamic programming. Have you heard of this concept? Yes. Okay, so what this thing actually does is, suppose if I consider a recursive tree over here. So what is the actual thing which is
increasing the exponential time complexity for me. The more I traverse into the depth of the tree, my time complexity increases. Right or wrong? Right. So one thing we can observe is, as the left ones are computed earlier, so we see that f of 2 is already computed, right? Right. So do we have to recompute this? Do we have to go into the depth of the tree, recompute, then come back, return the answer for this? Or if we have this value, then we can reuse it here. Yes, yeah, we can reuse. We can reuse it, so it will save a lot of time for us. So what happens if we return the value directly from here? I'll not have to traverse to the depth of the tree, and by that I can save a lot of time. So what can we do here is, so how can we store these results? We can store them on the basis of tables. We'll be creating a table where we'll be storing these intermediate results, and if the result is found in the table, then we'll return it directly from here. So can you say that in this recursive function, if I have to design the table, how will I design it? Table is nothing but an array over here. Suppose if the array's name is DP, how many parameters will be there in the table? No idea here. Okay, firstly, tell me in my recursive function, earlier there are 3 parameters, right? Okay. How many are changing when I'm recalling the recursive function? 2 are changing. 3 of them are changing. See, I is becoming I plus 1. We are changing the tighter bounds too, right? Okay. So, in short, we'll be creating a DP of a 3D array over here. Right or wrong? Right. Okay, so what would be my dimensions over here? Dimensions of the array. No idea there. Okay, so what is the max length of the string which you can assume? Any number up till 10 power 9. What could be the max length of the string you can assume? 9, 10. 10. Because 10 power 9 over here has 10 digits, right? So what we can do is we can consider it a bit higher, up till 11 or 12. And as these two represent the tighter bounds, right? The tight values are Boolean values, right? So they return in 0 or 1. So what could be the index? What could be the size over here? 0 to 9, like 10 or something. Not 0 to 9, 0 to 1. Now think, what could be the size here? 2. 2, right. So it will be 2. We have designed this table, and immediately before this test case, I'll be writing one more case over here. If dp of I TL TU is not equal to -1, then return this very value. Right or wrong? Right. Because what I told earlier, according to this tree, that if this value, what does -1 represent in the table? -1 represents that currently this table index hasn't been filled with any value over here. So if I have this index right here, and if this value has been computed and it is there in the array with me, so I can reuse it rather than going into the depth of the tree and doing all the procedures. I can just reuse it, right? Right. So I've kept it here, and when I'm returning, so what I can do is
I can write the statement in a bit more better way. Return dp of I TL TU equal to answer. Were you able to understand why I did this? Yes, sir. Yes, because see what we are doing, we are storing the intermediate result in the table. Answer was the result for these three indices, right? Right. When it came back, when it was trying to backtrack, so it returned this answer. So I'll store in an immediate fashion over here. In an immediate way, I'll store these results in the table. And whenever I come back to this particular case once again, then I'll reuse these values. Okay. Able to understand? Yes, sir. Okay, so we'll look through the code once. So this is the complete code for this. As you can see that whatever I had written earlier over there is the same thing which I have written. If the index reaches the end of the string, then we return a 0. If the value is found in the DP table, we can return the value from the table itself rather than going into the depth of the tree. We'll be designing our lower and upper bounds accordingly as per the type which we have designed. And then we'll be traversing from low to high to see our to check our cost and update our tight values, and then accordingly we'll call back the function also. And then we will be first we'll have to set the DP array to -1. Set all values in the DP array to -1, right? Right. And then call this for 0, true, true, a comma b. Why we are starting with true? Because as of now we have no bounds over here, and we have already been given that L is greater than R. So we don't have any case over here where we will be requiring type for the first index. So we'll be starting with true itself. Okay. So was this approach clear from my side? Yes, sir. I understand that you might be facing a bit difficulty because this is the highest version of DP which you can try. We'll be sending a few resources regarding that so that you people don't face a problem in it. Bhaiya, I haven't completed DP. Yes, I understand. I understand completely. Not a problem. We'll be teaching that in a few months probably, and we'll be sending you a few resources regarding it if you have any doubt. You can ask any Okay. one of us regarding this. Okay, sir. Sure. So going to the question number F. You're given an array of integers a1, a2 up to an and two integers s and x. Count the number of subsegments of the array whose sum of elements equals s and whose maximum value equals x. So moreover, this question actually tells that we have to just select those subarrays a, l to r such that the sum is equal to s and the maximum value is equal to x, right? Right. Okay, so now how will we approach this? So now I'll be using a concept of discrete maths which you'll be having later in your further semesters. So see, can I say that current sum should be s and max should be equal to x, right? Right. This is what I intend to find. Can this be written in a similar way that sum equal to s and max is less than equal to x minus sum equal to s and max is less than equal to x minus 1, right? But how? Yeah.
Because see, if I consider all sum is the same, sum is stagnant. But if all x minus 1 maximums are considered and all x maximums are considered, so can I tell if I subtract this, I'll get a condition that my max will be always equal to x. Okay. So this is one of the conditions. Suppose there might be many questions where they ask you to calculate the value of XOR from L to R. So what you do generally, that you calculate from 1 to L minus 1 and then from L to R. So, and then from 1 to R, consider this as x, consider this as y, and then you take the XOR of x and y over here. Because you know that if there are two numbers there are two same numbers, their XOR equals 0. So kind of that effect cancels. So if we try to understand it in that fashion, so wherever I have the max less than equal to x and less than equal to x minus 1, if I remove the x minus 1 parts from it, then I'll be remaining with the parts where the max is exactly equal to x, right or wrong? Right. So can I say that if I design a function for this one, then simply my answer would be nothing but f of x minus f of x minus 1. Yes. So now comes how do I design the function f of x. So any idea how can we design this? No clear. Okay, so you have an idea regarding hashing, right? Yes. Hashing an ordered map. So we'll be using that itself. Okay. Can I say that suppose if I have an array over here, if up till this point of time my sum is s, and this point of time my sum is 0. So can I tell, so how many subarrays can you consider where the sum is s over here? Was my question clear? No, dear. One sec. Can you repeat one more? Okay. Considering that my sum from here to here is s, and my sum from here to here is 0. Okay. So how many subarrays can I consider where the sum is exactly s? One. Are you sure it's 1? No, two. Yes, right. So can I say one thing, that if at how can we get 0 sum? By using negative numbers. Okay, now to compute that, we have a concept known as prefix sum, right? Yes, dear. You know the prefix sum? Yes, I know. Okay, so suppose if from L to R, if I have to have my sum 0, then what would be the condition for prefix? Uh, Is this right? right. Able to understand why I got this? Yes. Because what does prefix of R minus prefix of L minus 1 gives me? The sum of the array from L to R, right? Right. So if these two are equal, automatically my sum becomes 0. Yes. So can I say that when I am traversing through an array, if I compute the running prefix sum over here, and if I subtract it from S, and if I push it into the map,
If I just count the number of occurrences of this in my map, can I get the number of subarrays where S is the sum? Yes, yes. Okay. So now what we'll do is we'll be traversing through the array and we'll be dividing it into subsegments. How to divide it into subsegments? That wherever the max value is greater than X, I'll break it immediately. And then I'll consider a different running sum, right? Right. So accordingly, I'll be having a map over here. I'll be looping from 0 to n and I'll be having a prefix variable over here accordingly. And what I check that if my value becomes greater than X, the maximum value, or in fact the current value of the array becomes greater than X, that means if we get a better maximum, then we'll have to first clear the map and reset the prefix to 0, right? Right. Otherwise, we'll first find that if this exists in the map or not. Okay. Then accordingly, if it exists, we'll be adding its frequency to our answer, right? Right. And then accordingly, we'll be pushing this into our map also at this point of time. And we should also make sure that prefix sum is always updated to k of I. And then finally, we can return the answer. So this is the function which we have. And then accordingly, f of x minus f of x minus 1 gives me the answer. Right or wrong? So was this clear? Yes, clear. So we'll look through the code once. Okay, so first we'll be taking the input n, s and x accordingly. Don't worry about this. This is actually a lambda function. In C++, we have an option that while writing the code itself, we can create functions. So this is the lambda function. You can consider it same as the arrow function in JavaScript. Okay. So what I've done is, I've taken the x value from your maximum value. What does this ampersand represent? That anything outside the function can be used. Okay. That means just before this function definition, anything from this global scope can be used. Right? Right. So accordingly, I have my function over here. I'll be designing the prefix to be 0, rest to be 0, and what I do is MP of 0 equal to 1. I initialize it with MP of 0 equal to 1 because my current prefix sum is 0. Then I loop through the array, and if my AI is greater than X, that means if I get a better maximum, then I'll clear my map, I update the prefix, and I'll set MP of 0 back to 1 again. Else I'll add A of I to my prefix and find if prefix minus S is there in the map, then I'll add its frequency into the result, and then accordingly MP of prefix would be included into the array. And then I'll be returning the result, and that very same result I'll be using it over here to return my answer. So was this clear? Yes, clear. Chalo, great. So now we'll be checking the 7th question and the last question for the day. You're given a binary string S1, S2 up till Sn of length n. A string S is called binary if it consists of only of zeros and ones. For a string P,
we define the function f of p as the maximum number of occurrences of any character in the string p. Suppose in 00110, what is the maximum character here? Maximum character occurrence. Yes? Maximum character occurrence. One. That means out of 0 or 1, which character occurs maximum number of times, and if it occurs maximum number of times, what is its frequency? 0, the frequency is 3. Yes, right. Suppose if this is the string, what is the answer then? 3. Which character? 1. Right. So now we have to calculate it for all the pairs. That means for each that means I have a string from S1 to Sn. I have to select all the substring possibilities from it, find f of this substring, and return the sum of all f of substrings, right? This is what the question means. Right. Okay. So let us consider one example. 0, 1. How many substrings can this be divided into? 2. 0, 1 and 0. 3 substrings. 3. What is the value of f of x for this one? 1. For this one? 1. For this one? 1. Total answer is 3, right? Right. So now my question is, can we manually create each and every substring out of all the strings and then check over here for the answer and then conclude with the final answer? No, dear. Yes, right. We cannot do it because of higher constraints. So now how can we design it? So we have to use a bit of mathematics over here. Okay, consider that C0 and C1 are the number of zeros and ones in the substring. Suppose take the substring from L to R, right? Right. And let their length be L. So max of C0 and C1. This is only the value of f, right? Yes. Can I say it is C0 plus C1 plus modulus of C0 minus C1 divided by 2? Can you say how did this happen? No, dear. So, okay, chalo. Suppose if C0 is greater than C1, then what would be the return value of this? C0. C0, right? And if C0 is less than C1, what would be the return value? C1. Right. So was this clear? Yes. Yes. Okay, so this expression, it can be written as capital L plus mod of C0 minus C1 divided by 2, right? Right. Why did I write this as L? Sum of C0 plus C1. C0 plus C1 is the length of this substring, right? Yes. So now this is for one particular substring. Now this range is from L to R up till N. I'll have to calculate this, right? So now this will be a bit hefty calculation over here. But how can it be done? I divide it into two parts. L plus
Can I say that I can do this? Yes. Okay, so consider this part as T and consider this part as S. What would be my final answer if I am able to calculate T and S? It would be T plus S by 2. Yes. ठीक. So now we go on to calculate T. How can we calculate this? Can I say that this can be simplified to, suppose if L is the only parameter up till N if I go, then L into N minus L plus 1, right? Right. Because this is the possibility of all particular lengths which we are having. So how can we calculate them in this particular way? This can be calculated. So if I take out the sigma value of this using the concepts which you have learned in algebraic series, so my combined answer would come out to be n into n plus 1 into n plus 2 by 6. So I've calculated the value of t. Is this clear? No, like how this is come. Like, I didn't get it. You remember the algebraic series, right? Right. That suppose if I divide these into parts, so n goes out. L equal to 1 to n L minus L equal to 1 to n L square plus sigma L equal to 1 to n 1. Sorry, L. Right? Okay. Understood. Individually, if we go on to calculate this, we get this as our final answer. N into n plus 1 into n plus 2 by 6. So the value of t has been calculated. Now the main task comes up is this value, the value of s. Now we'll have to go on to calculate that. Okay, so what I do is I design a new array B, where B of I would be either 1 or minus 1 on the basis that if S of I is 0 or S of I is 1. Right or wrong? Right. Acha, why am I doing this? Any idea? Because see, ultimately, because of this statement, I have to prioritize my zeros instead of ones over here. So what I'm doing is, as soon as I'm getting a 0, I'm adding it to my count, and as soon as I'm getting a 1, I'm subtracting it from my count, right? Right. So what we do now, we compute this complete B array over here, right? Right. So can I say that the value of S is nothing but, if I consider sorry. Now consider an array P, which would be nothing but the prefix sum of this array itself. It would be the prefix sum of this array. So can you tell me that if I have to calculate between any range, then what would be my answer? Any range L to R. If I have to calculate this value, only this value, based on prefix, how can I do it? No idea. P of R minus P of L minus 1. It is just the same, nothing else. Okay.
That means if I have this expression with me. So can I say that if I convert this in terms of I and j, 0, I, j, n, then it is nothing but p of j minus p of I, which would be the sum of all my possibilities which I'm going to have. Right or no? Right or wrong? This is only going to be the value of S. Yes. So now how to calculate this value? Actually, this is mod of pj minus pi. Can you tell that how can I remove this mod? I can actually sort my prefix array to ensure that S becomes this. The mod gets removed so that I can always ensure that the value at my P of j is always greater than P of I. So I can remove this mod. Was this clear? Yes, yes. So now how to open this sigma over here? So can I say I is something which ranges from 0 to j minus 1 and j is something which ranges from 1 to n, right? Right. So now if I take this particular sigma inside this, so how can I change the value here? So can I say this, what I've written is completely right? Yes. Because see, as soon as the sigma goes inside, as I is the changing parameter here, and I have no parameters of I over here, so this is completely independent over here. So what am I doing is, j equal to 1 to n, p of j into Into j j minus 1. minus sigma of I equal to 0 to j minus 1, p of I. Acha, what is this thing? Yeah, prefix. Right? Right. Prefix sum from 0 to j, right? Right. Correspondingly, we'll be calculating this value and then we'll be adding it to our answer. So this is the value of S which we have calculated. So is this clear? Yes, clear. So we'll look through the code once. Accordingly, we'll be able to understand it better. So I've taken is the code part visible? Yes, yes. So accordingly, the X over here, which I had calculated earlier, which was T, was N into N plus 1 into N plus 2 by 6, right? Right. Then I told that we'll be designing a new array B where we'll be deciding what would be the value of ith index. So if S of I is 0, then the value will be 1, else the value will be minus 1, right? Right. Then I had earlier told that we have to sort this array over here. Yes, to remove mod. Yes. Yes, to remove the mod and make sure the larger values are considered first. Yes. So correspondingly, we'll be keeping a running prefix over here. And what we do is we loop from 0 to n completely. And what we do is
we'll be adding this answer, b of I into I. What I did over here was b of I into, correspondingly that itself I'm doing, b of I into I minus the prefix. And this would be added to our y over here. This is the s value which we are taking. And correspondingly, we'll be updating the prefix also. And in the final answer, we return x plus y by 2. So was this clear? Yes, clear. Okay then. So by this, we come to the end of our post-contest discussion. If you have any doubts, you can stay back and ask, or else you may leave. Thank you very much. Thank you. Yeah, I have doubt in one topic there. Ask. The topic is prefix sum. Oh shit. Okay, no issues. We'll send some resources regarding prefix sum. You can read that also, or else I'll tell you in just short what is prefix sum. Suppose if I have an array over here. I didn't have confidence on that topic. Okay, you don't have confidence on the topic. Then for that you'll have to practice questions. Only then you'll be able to gain confidence in that topic. And there are some standard things to know regarding prefix sum. Just keep them known. That suppose if you have to find the sum from L to R, then it is nothing but prefix of R minus prefix of L minus 1. You have to know some of these concepts also in hand, so that it will be easy for you to solve the questions. And if L minus 1 is greater than equal to 0, only then this can be applied, or else this part will be 0. Okay. No issues. We'll be sending a few resources regarding that, or if you have any doubt, you can contact any one of us. We can explain you this topic. Or Okay. any other doubt? No. Thank you, Bia. Thank you very much. Actually, I have asked for the re-recording of one class. It has been not sent in the group yet.